और Okay. प्लस प्लस कर लेते हैं, किसी दिन सेशन में माइनस हो गया तो फिर कवर हो जाए। So sir, I'm sharing the screen. We will. Okay. So we'll discuss from At 11. chat 11. Yeah. Okay. Let me share my screen. Okay. So TAT is on our screen right now. Mm. Observe it for 30 seconds. Then we will discuss it one by one. Okay. Okay. So who will start us? Ankush, will you start first? So, general for the picture, I perceive two characters. There is a farmer and there is a person. So, that person who is speaking to that farmer is my main character. I designate him as the agriculture officer who just passing by and was who was been instructed to advise the farmers about the modernization. So, he firstly tell them about the uh, HIV seeds, GM seeds, and the methods to improve their crop productivity. Besides this, he also conducted two soil tests for which he taken soil from the four corners of that land and send it to for the lab and send it to the lab for the test purpose. And later on, got a test survey done and given a report of that soil to that farmer. Meanwhile, he also introduced him to the um, various government schemes and also the subsidies which are given to the farmers on the fertilizer, etc. There are also some apps which are related to like farming. So he also tell them about that and also make them learn about the weather forecasting app so that be they could prevent their crops from getting ruined because of bad weather. I have you write that story somewhere already. Mm, but I think it is No, not no, no. possible to write that Nahin. much big story at that time frame. If not, then it's a very good narration as well. Yeah, like it was Okay, Narration pre-produced. is but let me tell you, I have like this क्या बोलते हैं सेम मैं पिक्चर देख चुका हूँ और मैंने ये स्टोरी बनाई थी. yes. I would also like to say that same kind of a story I've also made. But now, while he was, narrating his story, I think I should go with a different theme. Hmm. So, my story is around there are two characters as is shown in the picture, and the story is around the character who is wearing a turban is not the main character. So, the boy or the young looking person in the picture is the main character of the story, and he Hmm. is a lifestyle. Okay. So, Hmm. he is basically doing the Chakbandi. Chakbandi is basically, arranging all the fields of a common of a individual in a particular area, because in villages we have seen that the farmlands of all the farmers are at dispersed places. They are not collective at a single place. They are at Hmm. a distance. So it it generally doesn't help to get them a proper yield, because they sow seeds, some kind of a seeds here, then there. So all they become very unfamiliar, and it is very hard for them to manage as well. So he is a newly appointed Lekpal, and he has given the duty to do the check bandi for all the villagers or all the farmers in the field.
So he just talked to the Pradhan, he just talked to the Pradhan of the village. Then he went to each and every farmer. Then he collected all the data that which farmer has how many acres of land or whatever. Then he, proposed a preliminary, I would say, a report or whatever it is. Preliminary report he has given it, and then, you know, uh, given his data that this kind of this land is located to all those farmers. So in this way, he has uh, submitted the report, and thereon you know everyone gets to know that what is the share of the land or where they have got actually the land. So in this way, his Takbandi is completed, and he got appreciation from his seniors. And one more theme I am remembering is you guys will give solution. I will also explain or I will also narrate that story. Okay. Shall I go or So after your story I will narrate Satan? after my Okay, story, you will narrate it. okay, okay, Okay. okay. So my story is around in that traditional farming method story types. So Rahul, an agriculture student, visited a village. During his village, Rahul, an agriculture student, visited a village for his survey. During his village survey, Rahul interacted with an elderly farmer to understand traditional farming methods. As he was an agriculture student, he had learned the advanced modern techniques in his during his college days. So, so by going to farmer, he discussed the traditional farming method with him, and he given his knowledge of the modern techniques of farming and share his experience also with the farmer. The farmer mixed those techniques and implemented in his field, leading to good results in the production of the field. Uh, later on, uh, uh, Later on, Rahul also did some awareness program with that farmer by letting the other farmer know that this technique also works for better yield and better production of the crops. Props. Yes. Okay, one thing I want to add in your both stories, both of you. You can also add the angle of organic farming as well because organic farming has been a very hot issue in the recent times. We have seen Hmm. 16 and other North Indian states. Organic farming is in very much news, so it will also give a very attractive addition to the stories. Yeah, yeah, yeah. And Right, exactly. another thing that I'm talking about is another thing. It will be around collective farming is a term which is not very popular in India, but it can be also used. It's a additional theme, a very low level theme, I would say. But it goes something like that there is a ABC village, and all the farmers of the village, they are not very big landlords. Okay, they have some small land portions, and they just you know practice agriculture, and the yield is not enough, or it's Hmm. just enough to for their survival or just for their eating purposes. So what Hmm. they say, one of their village pradhan or one of the leaders of their community, he proposed the idea that okay, we can take whole land of the villagers, and then we will do selective farming. We will divide the section that in this section we have to sow this seed in this well, 3 or 4 section, and then they will cultivate different crops on all the areas, and after Hmm. that they will share all the crops in the ratios of how much land has been given or how much land मतलब they will basically उनका रेशियो में जिस रेशियो में लैंड होगा they will give the share of the yield in that ratio. So this kind of a story is it is basically Anand, why repeat your first theme? फर्स्ट थिंग क्या थी यार मेरी थोड़ा याद सीधा हाँ, लिख दो उसको, थोड़ा सा लिख दो चैट पे। थीम क्या थी भूल गया मैं मेरी प्राइमरी हाँ, अरे स्टोरी बच्चे सुननी बंदी बनती थी नसबंदी हाँ क्या कर हाँ रहे थे ठीक है ठीक है साले ठीक तुम? है अरे तू उसका लेखपाल का काम देख ले तेरे को समझ आ जाएगा मैं तेरे को तुम लोगों को एक प्रोफेशन की लीड भेज दूंगा 20-25 प्रोफेशन है उसको तुम पढ़ लेना तो मतलब उसमें तो कोई ना कोई प्रोफेशन 3-4 भेज प्रोफेशन दूंगा नहीं, चिपका दे तुरंत आराम से भेजो साले। क्या ही कर रहे हो ठीक है आप? मैं ग्रुप में भेजे दे रहा वैसे तो उसमें मतलब बीस hmm. पच्चीस प्रोफेशन है उससे प्रोफेशन का तैयार कर लेना आराम से हो जाएगा तुम लोगों का Okay, so we are moving to next story. Okay.
Okay. So this is our next story. Wait, कहाँ गया भाई? हंसी में देखा था मुझे। It is a very adventure story. It is looking kind of, they are, इनको क्या ओशन पे करेंगे ना. इसमें क्या है यार, इसमें तो वही हो ना सकते हो, हस्बैंड वाइफ गए Eh, सेलिंग करने, फिर वही फंस हस्बैंड वाइफ गए। रहते हैं कि साले थीम एकदम स्टूडियो वाली रहती है शुरू में. अब हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड जाते हैं क्या बॉयफ्रेंड तीनों. गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जीएफ बीएफ, क्या बोले भाई भाई? इसमें देखो कर सकते हैं कि मछुआरा है ठीक है कोई, वो अपना जो भी है जो इन द कोस्ट ऑफ मुंबई. मैंने तो कैसे कैसे पढ़े हुए हैं कि वो मुंबई कोस्ट पे जाते हैं फिशिंग करने के लिए. तो वहां पे क्या होता है कि they went too far from the coast, and after hmm. that the weather generally deteriorates. और फिर उसके बाद क्या होता है कि conditions, you know, heavy winds start blowing, rain starting, and the waves used to up and down in the ocean. And their yacht or boat, whatever it is, they are not able to hang it out very calmly. So they did the same. They went for fishing. They went too far from the coast. They were not aware that the weather is going to be worsened. Then heavy winds and rain started to, start. Heavy winds started and rain along with the rain. Then their water start to accumulate on their boat. So what will we do? First of all, they will try to ensure that the water that has been already stored in the boat, they just use the bucket or mug, whatever it is, they will take it and take it out from the boat, so that it will ensure that the boat will not go deep into the water. Other than they will place peacefully, they will use whatever navigation material is there with him, and they will head towards the coast, to reach safely. उसके बाद they will That keep calm. और क्या करेंगे. ओके, काम कर देंगे और फिर रेस्क्यू कर लेंगे उन सबको जो फिशरमैन थे, जिस विदर को भाई हमें वर्कर्स खुद ही मैंने। बचाना है. इसमें दो ही लोग हैं ना, तो हम अगर इसको हीरो बना सकते हैं तो क्यों किसी और को करेंगे. मतलब वही होगा कि हम्म ठीक है, आफ्टर सब्सिक्वेंटली वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द कोस्ट, एंड आफ्टर सम टाइम दे विल नोटिस दैट द रेन हैज is down, the winds have also is down, and they will make to the coast. And after reaching there, they also, from the next time, they also ensure that before they go to the fishing, they ensure to have a check at the weather conditions or the weather forecast before going too deep into the water आई or थिंक too वी far away टेक टू from the मच coast. टाइम फॉर आई थिंक वी टेक टू मच टाइम फॉर राइटिंग अवर स्टोरी, सो लेट अस मे टेक ओनली 1 minute टू narrate our story, मतलब मेक Like इट शॉर्ट. in 1 minute, it is impossible because uh, we have seen in PPT, we have already our stories are written on the paper, and then we will use to try and narrate in our own terms. That's why then we kind of learn our story to narrate in 1 minute. But here we have to just think and then have to narrate on the spot. It makes it a bit tougher to uh, contain all the points and then narrate the story. अच्छा, ओके ओके. Okay, so my हाँ. story will be around and flood a flood relief operation type. So हम्म. I'm making him the main person as Rohit. So Rohit led an NCC volunteer team. uh, he got to know that in a village nearby there are it got मतलब flood बाढ़ आ गई है वहां पे. So he made his team ready and using boat to evacuate the villagers who are drowning there.
he prioritized children and elderly people, and he went there, starting evacuating them. In short, everyone reached relief camp safely, and he also arranged some food and medical assistance to them, and with the help of team members he evacuate them safely and get all them to relief camp. When the flood come, everyone go to the village safely. कुछ So ऐसा टाइप का. my story was like the person owns a boat and he do a business of like sailing customers to like on the ocean. क्या बोलते हैं कभी है ठीक है. So in between he suddenly got interrupted with a thunderstorm. So he firstly make the customers his customers calm and compose. He starts with the help of them starts moving the water from the boat. Meanwhile, directed the boat in the direction of the waves, and with constant effort and determination, he is the source and बाकी हो गया बस और क्या. समझ नहीं आई भाई थोड़ा. फिल्म बता. नहीं सुन रहे. हेलो. हाँ हाँ. समझ. Narrator story a bit नहीं in है Hindi so that it is easier for us to understand. भाई. I will speak in English only. Wait. Okay, so please narrate So your story once again. hmm, so the theme of my story is that saving the customers. So Anand is क्या बोलते हैं वो अच्छा जो बोट को लेके जाते हैं कस्ट वो क्या बोलते हैं लगी जो कस्ट राइडिंग वाइडिंग राइड वाइड करवाते हैं. सेलर. अब वो मुझे नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ. Anand is a sailor along the coast of Kerala. He do the business of selling his customers, and so he got some customers and got stuck in the thunderstorm. He firstly make these customers calm and starts moving the excess water from the boat, and meanwhile also directed his boat along the direction of the waves, so that they could get a thrust from backward also, and with constant efforts he reached the shore and save the lives. अब सुनना अच्छा, है. okay, got you. The story was around like a person who is sailing, and he his boat is type of public boat which they give money, हाँ. and from one shore to another shore they went, like, right. And उसके बोट में पानी आ जाता है, then he start evacuating one by one, ऐसा कुछ ना. Yes. Okay, मतलब okay. what are the like अबे यार ये बंद बंद कर साले आनंद से तूतिया. क्या भाई. माइक माइक बंद करो. हाँ. So what like tell me some actions which we can do to save the lives, to take uh, the boat along this shore. you must have life jackets on your boats, Next. और उनको जिन कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसको तुम वहां पे लगा सकते हो ताकि पानी और ना आए ऊपर. And also do not panic because if you start going here and there, then the balance of the boat will also cripple, and it might get down into the water as well. So please be calm and be seated, I would say. So Don't panic. gentlemen, I have a question from Anand. Hello. Yes, yes. Yeah, yeah, yeah. Anand bhai, will you register your vehicle in Ola, Rapido or Bharat Taxi? Why this is not the context of our discussion. Okay, so we will discuss it later. You are going to I have stream some live on questions, YouTube. bro. You are going to be streamed on YouTube. You don't know. Okay, let's Okay, move on to so we next. are moving to next story, and this is our story. This is a snake or what?
Prashant, you have made a rescue story on the previous picture. Now made a story on this one because this is looking to be a typical flood-like situation or a flood-like picture. Hmm. I'm going to make a story around flood and relief evacuation. मैं भी ऐसे ही बनाऊंगा. यार Bhai, उसके हाथ both में the गोली नहीं pictures दिख have. रही गन. The person Okay, sit, I am narrating first this time because on previous two stories, Ankush has started and Anant has started, so this is my time. Okay. Hello. Okay, I'm saying what is that the issue? hello. Yes. I'm saying that that person is pointing something. Isn't it a gun or something? No, no, this is not a gun. It doesn't like look like it look like a stick or something like that. Stick type. And he might be checking the. होता नहीं है कि he just put the sticks onto the ground then walks for Water the level. वाटर लेवल के चेक करने के लिए कि उसका पैर कभी गड्ढे वगैरह में ना गया तो फिर कलम से गिर गया समथिंग लाइक दैट ओके Okay, so भाई my फॉर so let me narrate my story. Uh, a main character of my story is Aman. This person, so he's on a boat trip. Okay, so during a boat trip, Aman noticed a passenger had fallen into a river. Or seeing him, he remained calm and calmly threw a life jacket and guided the person toward the boat. And with the help of other person, he pulled him भाई back डज इट लुक safely. प्रैक्टिकल वेट Hmm? वेट वेट डज इट लुक प्रैक्टिकल the water is below his knees just above his knees है ना और इतने वाटर में he just started drowning how is it even practical अगर if he is an elder person, तो वो अगर यार गिर गया तो no उठ नहीं elder पाएगा. person will no how will he fall यार don't make it story Unconscious in such a way if he get unconscious. If he get unconscious. okay, so he gets unconscious in the water. You are adding negativity at your own. There is no negativity shown. He is just, you know, kind of a sitting or he try to balance because look at his hand. He is holding the boat as well. How an unconscious person will hold the boat? Hmm. Point. Okay, so what is your story? Why my story is around a relief story that you have made on the previous one. And if you guys have any other stories, then please narrate. Otherwise, we should move to the next one as well. Or Satang, I will last picture full now. Please open the previous one. What? Please open the previous picture, the 12th one. This one. You have made a relief or flood relief, like, है ना? Hmm. Hmm. How many times you have seen a yacht in a flood relief operation? मे बी वहां पे कोई और बोट ना अवेलेबल रही हो तो जो रिसोर्सेस थी अवेलेबल उसी पे भाई चले गए तू वो. अपनी स्टोरी जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी बना दे रहा है उसको बेहोश कर दिया अब यहाँ पे कह रहा है वो मतलब और इससे तू ये देखना कि भाई वो एक चीज ऐसे हाथ पे माथे पे हाथ रख के आंख से देख रहा है कुछ पॉइंट कर रहा है तो अगर उसके आसपास कोई ऐसी चीजें होती तो फिर वो कर लेता ना मतलब उसको देखना थोड़ी ना पड़ता अगर फ्लड रिलीफ से वेकेशन वगैरह कुछ कर रहा होता तो मतलब मुझे ये लग रहा है ना कि तू नेगेटिविटी से या तो फर्जी भाग रहा है या तो फिर जिसमें नेगेटिविटी है तो उसमें तू नेगेटिविटी ला नहीं रहा जिसमें नहीं उसमें तू फर्जी नेगेटिविटी ला रहा है अपनी थीम सेट करने के लिए तुझे क्या लगता है मतलब तुझे नहीं लगता कि ये मतलब फ्लड रिलीफ के लिए ये स्टोरी अप्रोप्रिएट नहीं है मुझे पता था कि कोई ऐसी स्टोरी आएगी तब मैं उसको पॉइंट आउट करूंगा वो हम्म. अगली आ गई भाई ये गलती मैं भी करता था लेकिन वो क्या ना हम लोग परफेक्शन की तरफ जाते हैं शुरू शुरू में हम्म. तेरा तेरा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट था तू वो लिख भाई अब मुझे पता है तेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट वो नहीं था ये तो तूने फिर मेरी स्टोरी सुन ली तो तुझे लगा कि थोड़ा अलग ट्राई करता हूँ या फिर एक वो प्री कंसीव्ड आइडियाज होते हैं कि अगर हमें पानी या बोट दिख गई तो हमें सिर्फ सी बनाना है एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू अवॉइड प्री कंसीव्ड आइडियाज और प्री कंसीव्ड थीम्स दैट वी हैव So, gentlemen, I have a good idea for the next picture. एक second बोलो ओके next picture खोलिए. Yes, we can make like the two friends trying to make a boat.
for enjoyment purposes. So for that purpose, they watch a YouTube channel and taken suggestions from that. Taken to prepare proper model on the AutoCAD. AutoCAD is a like a software in which we can make 3D models. भाई भाई Thereafter, भाई भाई सुन ले. बोलो. Okay, you are making a boat, okay, and you are making a boat while under construction. The boat is on the water. Even if you have seen the INX Dunagiri, INX Vindhyagiri, or whatever ship Indian Navy has been launching, They first of have all, they already are made made on the the boat and ground. they are just trying to check it, like whether it is comfortable on water or not. After after taking it in the shallow water, they taken it to deep waters and start practicing ऐसे करके. Sang by rate his senior. मैं ठीक है। बना सकते हैं, ठीक है. मतलब मतलब अगर ये हाँ। अच्छे एक्सेंट डाल दे तो हाँ हो जाएगा वो. भाई मेकिंग बोट इज नॉट अ पीस ऑफ केक यार। मेरे दो दोस्त हैं या हम दो दोस्त हैं, हमारा मन कर गया तो हमने बोट बना दी। दैट इज इवन विद प्रैक्टिकल। हम्म। मैंने कल एक चीज बोली थी तुम लोगों को ना, उस जगह के खुद को रख के देखो। तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं कि they are preparing for the boating competition and they are the like living they are like केरला में क्या होता है, केरला में बोट होता है ना, बोट रेस. भाई बोट हम्म। कंपटीशन के तो लिए दे विल डेफिनेटली हाँ, दे विल डेफिनेटली प्रैक्टिस एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग। बट जो तूने बोट बनाने वाला वो मेरे को समझ नहीं आई। ये बोट रेस वाला कर अबे सकते हैं, यार, वहां पे एक वो होता है। अरे मेरे यार दोस्त ने बनाया था नॉर्मल। बोट, एक था. तो क्या हुआ उसका, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ, क्या अभी मतलब, अच्छी प्रिपरेशन उसको नहीं कर जो रहा है ना अभी वो। फीडबैक्स मिले थे वो तो अच्छे मिले थे ना. कहाँ से कोचिंग कर रहा है, कौन सी कोचिंग गया था? कोई कोचिंग नहीं गया. भाई फीडबैक कैसे मिल गया उसको? फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ दैट कैट, दैट कॉल, दैट कैट जी मीटिंग चल रही थी हम लोग की. मतलब ऐसे ही सेशन टाइप चल रहा था। Yes. अच्छा, we can make a story around in that picture, like around boat race. We can make it, or we can also make it like they were doing fishing and fishing भी related तो बना सकते हैं। भाई पहला देखो फ्लड हो गया, दूसरा फिशिंग हो गया, तीसरा बोट रेस हो गया। बोट रेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने हम्म। अपने आप को रजिस्टर किया है। और केरला में फेस्टिवल मुझको याद नहीं आ रहा, उसमें फेस्टिवल बोट रेस वो पोंगल क्या होता है भाई, ऐसा कुछ होता है उधर। हाँ हाँ, अरे वो बोट लंबी रेस में कुछ, बोट होती है, वो लंबी बोट हाँ होती है वो वो। लंबी लंबी बोट होती है, कुछ नाम रहता है उसका। तो हाँ वही वाला फेस्टिवल है। तो भाई ये तीन चीज मेरे को सही लगाई। बाकी अगर इफ यू गैस स्टिल थिंक्स वल्लम मतलब कली। और कुछ भी शूट हो सकता है फिर कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं। मतलब ठीक देख, है, तो वी आर इसमें मैं ना हाँ। अपने ओपिनियन डाल रहा हूँ, मैं अपने आइडियाज किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर रहा। मतलब जो मुझे पर्सनली जेन्युइन लगता है कि हाँ ये चीज फिट हो सकती है, ये फिट नहीं हो सकती अपना है, तो पहला मैं वो आइडिया आइडिया सब बताओ दे रहा हूँ। अनंत. हेलो. पहला आइडिया भाई मेरे को इसमें वही लगा, फ्लड रिलीफ का, इस पिक्चर पे। फ्लड रिलीफ. हाँ फ्लड रिलीफ में कुछ दिख तो रहा नहीं, लाइफ जैकेट वगैरह. भाई देख उधर अगर तू देखेगा तो बगल में पेड़ भी है तीन ठो। ठीक है, अबे देयर ये आर सब थ्री छोड़ो, ये ट्रीज। जो सांप जैसा है, सांप स्नेक है क्या, क्या है ये? इट इज नॉट अ स्नेक, यू विल कंसीडर इट्स एनी ऑफ द क्रिएचर्स लाइक अ डॉग और समथिंग। है। ये डॉग है. भाई वो नहीं, जो सबसे कॉर्नर पे तीन है ना, दो जो जो तुम लोगों को दो सांप दिख रहे हैं, या फिर उसको ये बोल सकते हैं भाई, बता रवि। अबे तो पेंगुइन लग रही भाई. पेंगुइन नहीं, इसको हम वो मतलब ले सकते हैं डक, वी आर टॉकिंग समथिंग अबाउट लाइक अ दिस, डक। हाँ हाँ एंड दिस डक इज ले सकते हैं इसको। डक, नो यार। चील ले ले फिर। दिस दिस कैन नॉट बी डक एंड चील। व्हाट विल चील डू हियर? चील नहीं भाई, सील, ऐसी एल। हाँ, सील हो सकती है. सील इज अ ओके, ओशियनिक क्रिएचर। so they are standing in ocean and the water level is अबे like इतना। ये ओसिन कहाँ से आ गया बे? ओसिन लग रहा है तुम्हें. भाई मैं कह रहा हूँ ना, वो चीजें इतने गौर करने की नहीं। उसमें तुम कोई भी क्रिएचर ले लो पानी में जो भी रहता हो, ठीक है, उसे डक हाँ, एज्यूम कर ओके लो, ओके क्या उसे यार, डॉग एज्यूम कर लो। ओके, so we are proceeding to next story. We डॉग had रहते हैं पानी given में. too much time on that story. अबे भाई.
भाई इसमें तो एक ही आइडिया आ रहा है मुझको कि मैं इसको मेन कैरेक्टर को हीरो बना दूंगा जो बॉय है, ठीक है। हम्म। और ये मैम है, इसको मैं किसी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर को वो हेड बना दूंगा, डिपार्टमेंटल हेड, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस स्टडीज का, ठीक है। सो ठीक है। शी इज द हेड ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड शी हैज the boy has been given the responsibility of conducting a debate competition about the international relations of, two or three countries, or हम्म। it's which competition. So he has been हम्म। given the duty to organize, so he will publish all the details to all the faculty students, and it is open for the students, irrespective of what the faculty they belong to. The eligibility is they should belong to the college, or they will also make a percentage criteria so that only genuine students could come and join the debate or the quiz competition. Along with that, he will also conduct some pre-quizzes so that he can also इसको क्या बोलेंगे, he can also filter candidates, मतलब कि उसमें एक में हो सकता है कि नॉमिनेशन बहुत ज्यादा आ जाए, मतलब ये हम उसको प्रॉब्लम दे देंगे कि he got a lot of nomination, let's say 300 but the seats are only 30. So he will हम्म। arrange a pre-quiz competition, and in this way he will filter the candidates and he will select the 30 best 30 out of them. Then he will present him to the faculty students. Then he will provide all the details, the venue, the place, and the topics to prepare for the quiz competition. Later on, he will organize the quiz competition, and they will also decide the winners. They will also decide the prize winners or the awards for the winners. In this way, the quiz competition has been conducted very smoothly and he got appreciated. उसको भाई फैकल्टी हेड कुछ बोलते हैं यार, मुझे तो याद नहीं आ रहा वो टर्म। किसको? फैकल्टी के हेड को, फॉर एग्जांपल डिफेंस डिपार्टमेंट का हमारा, उसको कुछ याद नहीं आ रहा उसको बोलते हैं। सो ही गॉट अप्रिशिएटेड बाय द फैकल्टी हेड, जो भी मैम एचओडी, थे हेड अपने। ऑफ डिपार्टमेंट। हाँ एचओडी, ही गॉट अप्रिशिएटेड बाय द एचओडी, ऐसे कुछ। भाई डिबेट कंपटीशन कर दो, क्विज कंपटीशन कर डिबेट दो, कंपटीशन, कल्चरल इवेंट हम कर सकते हैं कोई भी। वी कैन मेक कल्चरल इवेंट कर ऑल्सो सकते सोशल हैं, सोशल स्पोर्ट अवेयरनेस कंपटीशन, कैंपेन कर सकते हैं, जैसे सोशल ब्लड अवेयरनेस कर सकते डोनेशन हैं, टाइप कैंपेन। ठीक है। वहाँ कर सकते हैं। कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, जैसे वही एनजीओ जिसमें वगैरह कुछ कर कल्चरल इवेंट। सकते हैं। और ऐसा एक अगर स्टडी रिलेटेड बनाना है तो हम ऐसा बना सकते हैं कि शी इज अ गर्ल हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन और वाज ट्राइंग टू नो व्हाट टू डू इन career or in education field. So the boy noticed that she is worried, so he guided her about what she can do in like and motivated her, है ना, ऐसा टाइप में। भाई एक बात जानता है रवि, जब हम लोग भोलेश्वर के साथ करते थे, हाँ। तो भोलेश्वर ने एक स्टोरी ऐसी थी, तो उसने कहा है कि जो स्टोरी सब बनाते हैं उसमें थोड़ा हाँ। अलग रहो। मतलब अब देख इसमें जैसे ये चीज है कि ये स्टोरी ऐसी दी गई है कि हम इससे, हमारे पास चॉइस है कि हम पॉजिटिव स्टोरी बनाते हैं कि नेगेटिव बनाते हैं कि न्यूट्रल बनाते हैं, ठीक है। यस। तो अगर हम इससे, जैसे वो कल्चरल वाला हो गया या कोई कुछ कंपटीशन हो गया या कुछ ऐसा हो गया, अगर हम उसमें वो चीजें कर सकते हैं तो देर इज हाँ। नो नीड टू ऐड नेगेटिविटी, क्योंकि उसमें ये चीज पोर्ट्रे होगी ना कि हाँ ये बंदे के पास भी ये भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता होगा। मतलब उसमें हम क्या करते हैं ना कि स्टोरीज में वी आर जस्ट पोर्ट्रेइंग आवर ओन पर्सनालिटी। हम्म। तो सही है। ऑल दैट ओके। आई वांट टू से कि इफ यू नो वेन एवर, जब तक पॉसिबल है हम्म। तब तक देर इज नो नीड टू ऐड any kind of a negativity, any kind, because if he is thinking negativity or he just got demotivated time by time, then it is a bad trait of her. Because in army we are given a lot of, or in any forces we are given a lot of responsibility. हाँ भाई हम कुछ। The gentleman, I have a quite a different theme. We can take that like building behind as a monument where the number of footfall is quite less. So a person from the Archaeological Survey of India something has come to increase the footfall. So for the same purpose, हाँ नहीं अच्छा लगा, कोई बात नहीं भाई, कोई यह बात नहीं स्टोरी सर। कंप्लीट भी हो गई क्या? बाकी अपने अकॉर्डिंग आप थीम ऐड कर दीजिए, एक्शन ऐड कर दीजिए। ठीक है भाई, स्टोरी में कोई दिक्कत नहीं, बस एक्शन सही हो जाएंगे तो बढ़िया स्टोरी। मुझे को तो एकदम बढ़िया लगी, कोई दिक्कत नहीं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाला ऐड करके सही कर सकते हैं उसको। You are the psychologist. If you have any problem, then we have problem. भाई आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट यार। दो चीज याद रखना, ठीक है। पहला, देयर इज नो नीड टू कॉपी माय आइडियाज, ठीक है।
Everyone has a distinct personality. And if I am imposing myself on you at any point, then please let me know. I'm just giving my feedback, whatever I think is right. There is You no need imposed to, me yesterday, right? stick to those. There is no need to stick to suggestions that I give. And if you Okay, have better so suggestions or better hmm, counter, then you can counter. Yeah, I am most welcoming to accept my mistakes. okay, gentlemen. So now we are proceeding to our next and last story of today's session. हाँ भाई हो गया Hmm, Yes. चल no नरेट करो कुछ vacancy. So, gentlemen, from the picture, I perceive one character, and there in the background we can see the no vacancy is written. So, it is quite related to job. So, we can take something like interview. So, Anand has been trying a lot for many jobs, but is not getting a good job. So, he went for a went for a private job for which he filled the form online, prepared very well, went but found there is no vacancy. क्या भाई क्या बोल रहा हूँ यार वेट तू रुको बोल यार रहा है ना क्या बोल रहा है I need to frame some actions thereafter I will tell wait ओके शतांश Hmm. So Aman, 24, came to a city for a job interview. After the interview, he searched for accommodation, but every hostel or every restaurant he went, he found no vacancy sign there. So instead of getting discouraged about no space or no vacancy in the hospital, in the hostel or in the resting area to rest, he then contacted one of friend on the city of the city. Then he found a temporary accommodation and attended another interview. Later, he found the he get that job, and his hard work and perseverance paid off, and he secured a good job. okay so my story is a bit different from yours Hmm. it will be around uh, Prasanth who has been preparing for government jobs and other employment he has noticed that his skill is not that up to the mark to fight from the current ongoing employment opportunities to fight for the current employment opportunities he found that he's been lacking in skill development so he went to two or three companies and he got he didn't got positive results so he went back and he talked to one or two of his seniors and he found that his skill set is not that much fully I would say he is not much developed तो ही इन्वॉल्व इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उसके बाद यार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मुझे याद नहीं आ रहा है कि we have a list of 16 17 courses that are of 6 months period and they will give a skill certificate uh, for the students or for the students who used to enroll on that courses उसके बाद they he enrolled on that course he got a certificate from the Allahabad University degree he worked very honestly and worked very hard to achieve that degree and he got proficient in the degree or the skill that he has learned then again he went to the same companies and he applied for the same courses on testing matlab, he performed exceptionally well and he got enrolled in the company Nice.
The part that you used, that he found himself not much sufficient or capable of that. He found that he is not that much skilled that required in job. That was very interesting part. मतलब उसमें He जैसे कि मैं खुद बीए से वाला हूँ तो मैंने अपने हाँ, आप को दिखा दिया कि मैं बीए करके हम्म, आया हूँ तो मैं किसी कंपनी में जॉब लेने गया तो वो कहने कि बेटा हम हाँ। बीए वालों को नहीं लेते एमबीए वालों से तो वापस आ गया मैंने एक कोर्स किया वापस आ गया. He had studied BA, so he studied only M. Later on, हाँ he found an MBA job. he found and he got the degree of MBA यार वो स्किल कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था 6 6 महीने कोर्स उसमें Hmm. तो उससे गारंटीज जॉब मिल रही थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चलो आवाज आई अच्छा, तो ओके. बस वही वाले मेरे को वो स्कीम यार जब मैं कॉलेज सेकंड ईयर में था तब आई थी वो तो मेरे को बेसिकली स्कीम का याद नहीं आ रहा लेकिन मैं उसको पढ़ूंगा थोड़ा क्योंकि ये स्टोरी पिक्चर आने के चांसेस रहते हैं कई बार Hmm. So you can mention any type of skill like data analyst, data scientist, or you हाँ यार can say ये तुम सही graphic बोली मैं designer, किसी स्किल video का editing, पर्टिकुलर में नाम नाम मेंशन कर सकता था सही कह रहा business analyst, any kind of you can mention here. या फिर इसमें एक चीज ये भी बोल सकता था कि मतलब उसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है वो मतलब किसी बड़ी कंपनी में experience नहीं था. अप्लाई करने गया ये बोल सकते हैं ना कि ये फाइल्ड एन एप्लीकेशन इन अ मेजर इंस्टीट्यूट बट दैट हम्म, इंस्टीट्यूट डिमांड्स इधर साइड खड़े हैं पास इधर साइड गेट के पास but they demanded a work experience for at least 2 years or for 1 year. हम्म, So they basically, so he basically joined a company for internship type process. Then he completed internship very diligent in a very diligent manner, and then he come back and gave the interview again into the company, and then हम्म, he got enrolled. ऐसा कुछ कर हम्म, सकते हैं हम्म, उसके बाद जैसे तुमने बोला कि डेटा साइंटिस्ट डाल सकते हैं या फिर ग्राफिक डिजाइनर डाल सकते हैं या फिर एआई हम्म, साइंटिस्ट कुछ भी ऐसा डाल देंगे हम्म. तो ये यही सही था है. भाई आज का मेरा Asha, so, listen, I was thinking that for that lecturate part, because GD is something that we can discuss directly, right? For हम्म lecturate, we need to at least study some points related to it, right? So, हम्म and we have not that much kind of knowledge that we can directly Okay, so I will be deliver. sharing a list of topics in the WhatsApp group. I have made these topics long ago. So Okay, okay, if you but don't have to go through all the topics, just you know, there is no need to learn see, about all those topics. Just have a what I go through want on to all those say. topics. Hmm, Yeah. hmm. What I want to say is that suppose we are going to do our lecture session tomorrow. Okay, so today any one of us will give um, will give us topics, right? जैसे आज मैं दे रहा हूँ, so I have given you two guys topics like 4 topics or 3 topics each. Okay, uh, it may be any topics, but related to recent lecture topic, we will share some kind of list of 100 150 topics that are asked on recent SSBs. Okay, तो द मेन आइडिया इज कि जैसे कल मान लो हमें लेक्चरेट करना है तो आज एक बंदा या तो मैं जैसे मैं हो गया तो मैं तुम दोनों को आई विल गिव यू थ्री थ्री टॉपिक ईच सो यू विल प्रिपेयर दीज 3 टॉपिक्स. ओके, एंड ऑन टुमारो आई विल से एनी वन रैंडम टॉपिक और उसमें आपको डिलीवर करना है लेक्चरेट. But why, as of now, मतलब, I would like to take the topic for myself on the spot and just need a require a 3 minute time to prepare for any one of the topics out of the 4 topics that are given to me. Then I will try to speak on the spot. Whether I have the knowledge or not, I will, just want to test myself in a pressure kind of situation. And it is totally okay if you are not, comfortable or if you have, because, you have started preparing just 2 or 3 months ago and I have preparing for a year or so. Yeah. So it's properly okay. And I will give you topics a day prior to our lecture. And if you both want, you can give a topic to each other. But मैं on the spot करना यार थोड़ा वो prefer करूँगा. Okay. Okay. I think if I also get like 1 day before, then there are high probability of the chances that I might ignore those topics and वो हम next session के पहले ही करें उसको. Okay, so I have an idea. I will give you 5 topics, and then Hmm. I will give you the topic that I want to. मतलब फिर I will decide on which topic you have to speak on the next day. Hmm. Okay.
वही तो मैंने बोला था। नहीं नहीं, यू हैव सेड कि 3 टॉपिक्स देंगे, उसके बाद 3 में कोई भी एक बोलो, लेकिन मैं क्या करूंगा, नहीं, 5 टॉपिक्स थ्री दूंगा। में, थ्री में वो कोई भी एक हमारी चॉइस का होगा, मतलब तुम्हारी चॉइस का नहीं होगा। नो, इट विल नॉट बी ऑफ योर चॉइस। ओके, तो हाँ। मेरे को तो ऑन द स्पॉट कर, तेरे साथ मैं यही करूंगा, मैं तेरे को 5 टॉपिक दूंगा, ठीक है। हम्म। 5 नहीं, गिव और मी स्टार्टिंग 3 टॉपिक्स। चल 3 दूंगा। हाँ। सो ओके, मतलब फॉर बोथ ऑफ मैं अस, अंकुश इसमें भी एंड शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों को उसमें ग्रुप में, ठीक है। yesterday you also shared some lecture topics that were मैंने, asked in recent SSBs. यू हैव Yesterday शेयर्ड I, इन गोपाल। या yes. भाई एक वो है मेडिकल टूरिज्म करके, ये भाई Hmm. मतलब 3 4 बंदे बता चुके हैं मुझको कि ये आता है लेक्चरेट में किसी ना किसी के। मेडिकल टूरिज्म वही हो गया कि, समझ रहे हो क्या, आप लोग जा रहे हो किसी देश में दिखाने, जैसे पाकिस्तान का भी इंडिया आया, तो Hmm. दिखा समझ रहे हैं गया, आप इंडिया समझ में घूम गया। रहा है, तो दिस इज मेडिकल टूरिज्म। तो इसको प्रिपेयर कर लेना थोड़ा सा, मतलब ये हॉट टॉपिक Gentlemen, मेरे को open अच्छा your नहीं लग रहा camera है। and start the lecture. Okay, so Anand, you shared 5 topics each. Okay, तुम you personally मुझे भेज देना, ग्रुप में बात भेजना, ठीक है। हाँ दोनों को ही, अंकुश को और मुझे। So we will do tomorrow lecture, okay? ओके। और अभी देखो ग्रुप में एक मैंने वो फाइल भेजी, तो दोनों को शाम को भेज दूंगा, ठीक है, रात तक। Okay, 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 okay. और So we are ये यहीं पे एंड करते हैं फिर से। ये लो मैंने एक टॉपिक भेजा।